हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। लर्निंग आउटकम्स हमारे क्या होने वाले हैं? अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग, नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एन एंटिटी, अंडरस्टैंडिंग द फैक्टर्स विच डिटरमिन द वर्किंग कैपिटल, learning the methods of estimating the working capital, understanding the various components of the working capital with its management, and then understanding the methods of receivable management. उसके बाद learning the methods of evaluating the receivables and implementation of the credit policy क्या होने वाली है? learning the importance and management of the treasury, that is cash in an entity, learning the various sources of the working capital finance, and learning the importance of the optimal inventory level and management of the पेबल्स हम पढ़ेंगे। चैप्टर ओवर भी देख लेते हैं क्या है। मैनेजमेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल, डिटर्मिनेंट्स ऑफ द वर्किंग कैपिटल्स, एस्टिमेशन ऑफ द वर्किंग कैपिटल साइकिल्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, पेबल्स मैनेजमेंट, फाइनेंसिंग ऑफ द वर्किंग कैपिटल, और क्या है यहाँ पर? कैश ट्रेजरी मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ द ट्रेजरी डिपार्टमेंट क्या है, ट्रेजरी मैनेजमेंट क्या है, कैश मैनेजमेंट मॉडल्स कौन कौन से हैं, रिसीवेबल मैनेजमेंट में क्या क्या है, फैक्टर्स डिटरमिनिंग द क्रेडिट पॉलिसी, फाइनेंसिंग ऑफ द रिसीवेबल्स, मॉनिटरिंग ऑफ द रिसीवेबल्स। ओके, दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 6 यूनिट्स। ओके, क्या क्या हैं? यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ओके सर, इंट्रोडक्शन करेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का। यूनिट 2 treasury and the cash management. Unit 3 management of the inventory, management of the receivables, management of the payables, financing of the working capital की भी फाइनेंसिंग हो जाती है। ओके, इस सभी हम पढ़ा है हमने, इसकी भी फाइनेंसिंग हो जाती है। तो ये पार्ट तो हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन के ऊपर ही है। ये ट्रेजरी कैश मैनेजमेंट के ऊपर है, इन्वेंट्री के ऊपर है, रिसीवेबल्स क्या है, पेबल्स क्या है। सिंपल है, ठीक है। चलो बढ़ेंगे आगे। यूनिट 1 करते हैं, इंट्रोडक्शन टू द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ द वर्किंग कैपिटल। पहले वर्किंग कैपिटल पता होना चाहिए। वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज होता है। करंट एसेट्स, एसेट इज क्लासिफाइड एज ए करंट एसेट, मैं ऑलरेडी पढ़ के आया ऐसा लग रहा है। इट इज़ expected to be realized or intends to be sold or consumed in the normal operating cycle of the entity or within the 12 months, मैं पढ़ा था इस 1 साल के अंदर अंदर, after the reporting period whichever is longer, and the asset is held primarily for the purpose of trading in the ordinary course of business. For the purpose of working capital management, current assets of the entity can be grouped into the following category। ठीक है, तो क्या क्या आते हैं वर्किंग कैपिटल में, करंट एसेट्स में? इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स, ये आते हैं इन्वेंट्री। रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड बिल रिसीवेबल। कैश और कैश इक्विवेलेंट्स इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। देन प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हमारे किस में आते हैं? करंट एसेट्स में आते हैं। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा क्या क्या हैं। इन्वेंट्री हो गया, ठीक है, इसमें कि रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स आ गए। रिसीवेबल्स आ गए हमारे, जैसे कि ट्रेड रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल जो हमें जल्दी से ही मिलने वाले हैं। कैश और कैश इक्विवेलेंट्स आ गए, इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ भी इसमें इंक्लूड होती हैं, जो कि इमीडिएटली हमें मिल सकती हैं। तो वो हमारे क्या होते हैं? करंट एसेट्स होते हैं। और प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होते हैं, ध्यान रखना, जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमने कर लिए हैं वो भी हमारे करंट एसेट्स होते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है हमारे क्या होते हैं, वो भी करंट एसेट्स में आते हैं। ये कैटेगरीज हैं इसकी, ठीक है। तो क्या क्या है? इन्वेंट्री आ गया, रिसीवेबल आ गया, कैश और कैश इक्विवेलेंट आ गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस आ गया। याद रहेगा? चलो आगे चलते हैं। अदर करंट एसेट्स में आल्सो इंक्लूड द शॉर्ट टर्म लोन्स और एडवांसेस, एनी अदर एक्रूड रेवेन्यूज एटसेट्रा। करंट लाइबिलिटीज़ के हैं, लाइबिलिटीज क्लासिफाइड एज ए करंट जब उसे जल्दी से अभी पे करना है विदिन 12 मंथ्स। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ एन एंटिटी विदिन 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड विच एवर इज लॉन्गर। समझ गए? तो वो भी यहाँ पर करंट की बात आ गई तो समझो 1 साल की बात आ गई, यानी 12 मंथ्स की बात यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। लाइबिलिटी मतलब पेबल है, पे करना है हमें, ठीक है। और एसेट का मतलब रिसीवेबल हो गया। तो इसमें और क्या सेकंड पार्ट, इट इज़ सेटल्ड इधर बाय द यूज ऑफ द करंट एसेट्स और बाय द क्रिएशन ऑफ द न्यू करंट लाइबिलिटीज़, ठीक है। तो कैसे सेटल होते हैं? या तो करंट एसेट से, करंट लाइबिलिटीज़ करंट एसेट से सेटल होंगी, या फिर दूसरी करंट लाइबिलिटीज़ बना दो।
ठीक है, यहाँ पर लोन देना है, दूसरे से लोन लेके इसको दे दो, ठीक है, दूसरी लाइबिलिटी बना दो। फॉर द पर्पस ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करंट लाइबिलिटीज ऑफ एन एंटिटी कैन बी ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज: पेबल, आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स। आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स क्या होती हैं? वेजेस, सैलरी, ओवर एंड अदर एक्सपेंसेस। तो वर्किंग कैपिटल बेसिकली क्या आ गया, हमारी लाइबिलिटीज़ क्या क्या हैं? सैलरी देना हमारी लाइबिलिटीज़ है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग पेमेंट जिसे कहते हैं, और दूसरी पेबल हो गई, जैसे कि ट्रेड पेबल्स एंड बिल्स पेबल हो गई। इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो, वाटर यूज़ कर रहे हो, वाटर चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो गए, इंटरनेट चार्जेस हो गए, ये सारे क्या हैं? बिल्स पेबल हो गए। ट्रेड पेबल्स क्या हो गए? हमें ट्रेड में हमें कुछ सामान हमने क्रेडिट पे खरीद लिया, उसके लिए कुछ पेमेंट करनी है, तो ट्रेड्स पेबल हो गए वो हमारे लिए, ठीक है। तो ये हो गया पेबल्स, और दूसरा हो गया आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स। अदर करंट लाइबिलिटीज़ में आल्सो इंक्लूड द शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। दूसरी करंट लाइबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हो सकती हैं, करंट पोजीशन ऑफ द लॉन्ग टर्म डेट हो सकती है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस दैट आर पेबल विद इन द 12 मंथ सच एज द प्रोविजन फॉर द टैक्सेस। अच्छा, टैक्सेस वगैरह हैं, ये भी प्रोविजन फॉर टैक्सेस रखा है, ठीक है, जो कि विद इन 12 मंथ्स है, ठीक है। तो ये भी हमारी क्या बन जाती हैं, क्या कहते हैं उसको, लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़ बन जाती हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कैसे करना है? इट इज़ अ प्रोसेस which is designed to ensure that an organization operates efficiently by monitoring and utilizing its current assets and current liabilities to the best effect. Primary objective is to enable a company maintaining sufficient cash flows in order to meet its day-to-day operating expenses and its short-term obligations, ठीक है। तो मेंटेन सफिशेंट कैश बैलेंस मेंटेन करके रखना है, ज़्यादा भी सफिशेंट बोल रहे हैं, सफिशेंट ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। ज़्यादा करेंगे तो वो इसकी अपॉर्चुनिटीज़ रुक सकती हैं, कुछ कहीं और इन्वेस्ट कर सकता है तो उस पैसे को, और कम रखता है तो किसी की वेजेस रोक दी, कुछ रोक दी तो एक डिस्ट्रेस का माहौल हो जाएगा। द कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन्ड थ्रू द टू एंगल्स, ठीक है, टू एंगल्स। वर्किंग कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। वैल्यू के बेसिस पर ग्रॉस और नेट, और टाइम के बेसिस पर परमानेंट एंड फ्लक्चुएटिंग, ओके। वर्किंग कैपिटल परमानेंट और फ्लक्चुएटिंग ऑन द बेसिस वैल्यू, ग्रॉस और नेट। वैल्यू के बेसिस पे देखते हैं। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू, वर्किंग कैपिटल कैन बी डिफाइंड एज द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और द नेट वर्किंग कैपिटल, ओके। हमने ऊपर पढ़ लिए। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू द फर्म्स इन्वेस्टमेंट इन द करंट एसेट्स। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मतलब, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब है इन्वेस्टमेंट इन द करंट एसेट्स। नेट वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। समझ गए? नेट वर्किंग कैपिटल जब बोल दिया तो उसका मतलब वो डिफरेंस है बिटवीन द करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, ठीक है। जब नेट की बात आ गई तो डिफरेंस की बातें यहाँ पर आ गई हैं, ठीक है। ग्रॉस की बात आ गई तो उसके करंट एसेट्स की बातें आएंगी। क्रॉस वर्किंग कैपिटल मतलब, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब है करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन द करंट एसेट्स, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। A positive working capital indicates the company's ability to pay its short-term liabilities. On the other hand, a negative working capital shows inability of the entity to meet the short-term obligations, ठीक है। टाइम, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टाइम, वर्किंग कैपिटल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। परमानेंट हमने देखा और फ्लक्चुएटिंग देखा। परमानेंट वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू द बेस वर्किंग कैपिटल विच इज द मिनिमम लेवल ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द करंट एसेट्स that is carried by the entity at all times to carry its day-to-day activities. It generally stays invested in the business unless the operations are scaled up or down permanently, which would also result in increase or decrease in the permanent working capital. It is generally financed by the long-term sources of finance. Temporary working capital refers to that part of total working capital which is required by an entity in addition to the permanent working capital. It is also called variable or fluctuating working capital, which is used to finance the short-term working capital requirements which arises due to the fluctuation in the sales volume. For instance, an organization would maintain increased level of inventory to meet the increased seasonal demand, ठीक है। The following diagram shows the permanent and temporary fluctuating or variable working capital.
यह देखो परमानेंट, यहाँ पर क्या है टाइम के साथ साथ अकाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल परमानेंट, और यहाँ पर टेम्परेरी अकाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल टाइम, और ये है परमानेंट एंड टेम्परेरी। परमानेंट बढ़ती जा रही है। बोथ काइंड्स ऑफ द वर्किंग कैपिटल दैट इज परमानेंट एंड द फ्लक्चुएटिंग that is temporary are necessary to facilitate the production and sales through the operating cycle. Significance of the working capital क्या है? Importance of adequate working capital. Management of the working capital is an essential task of the finance manager. He has to ensure that the amount of working capital available is neither too large nor too small for its requirements. A large amount of working capital would mean that the company has idle funds. Since the funds have a cost, the company has to pay huge amount of interest on such funds that are used to invest in the surplus working capital. Another way to look at it is that there is an opportunity cost involved, where the company could have invested the surplus funds in long-term investment and earned some return on the same. Various studies conducted by the Bureau of Public Enterprises have shown that one of the reasons for the poor performance of the public sector undertaking is our country has been the large amount of the funds locked up in the working capital. This results in the overcapitalization. Overcapitalization implies that the company has too large funds for its requirements, resulting in a low rate of return, a situation which implies that less than optimal use of the resources. On the other hand, if the firm has inadequate working capital, such firms run the risk of the insolvency. Paucity of the working capital may lead to a situation where the firm may not be able to meet its liabilities. It may also mean a company may not be holding the enough inventory in order to meet the customer's demand, and hence would lose sales and eventually some reputation as well. An organization therefore has to be very careful in estimating its working capital requirements. Maintaining adequate working capital is not just important in the short term. Sufficient liquidity must be maintained in order to ensure the survival of the business in the long term as well. When businesses make investment decisions, they must not only consider the financial outlay involved with acquiring the new machines or the new buildings, etc., but must also take account of the additional current assets that are usually required with any expansion of the activity. Example: increased production leads to holding of additional stocks of the raw materials and work in progress. An increased sale usually means that the level of debtors and finished goods inventory requirements will increase. ठीक है ना, इंक्रीज सेल हो रही है, इसका मतलब क्या है? इट मीन्स दैट द लेवल ऑफ डेटर्स एंड द फिनिश्ड गुड इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट्स विल इंक्रीज होने वाली है. ठीक है. डेटर कौन होते हैं? डेटर होते हैं उधार लेने वाले. क्रेडिटर कौन होते हैं? जिन्होंने उधार दिया है. इंक्रीज्ड सेल इंक्रीज हो रही है तो क्या हो रहा है? डेटर्स भी बढ़ने वाले हैं. फिनिश्ड गुड इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट जो है हमारी वो भी इंक्रीज होने वाली है. वो हमारा डेटर है, वो हमारा क्रेडिटर है, वो हमारा डेटर है, उसने उधार ले रखे हमसे. नेट रिसीवेबल है उससे. वो हमारा क्रेडिटर है, उसने पैसे दे रखे हैं. हमें पेबल है, उसके लिए कुछ पेबल्स रहेंगे. A general increase in the firm's scale of operation tends to imply a need for the greater levels of working capital. A general increase in the firm's scale of operation tends to imply a need for the greater levels of working capital. Okay. A question that arises: what is an optimum amount of working capital for a firm? An organization should neither have too high an amount of working capital nor should the same be too low. It is the job of the finance manager to estimate the requirements of the working capital carefully and determine the optimum level of investment in the working capital. Optimum working capital क्या होता है? If a company's current assets do not exceed its current liabilities. अगर एक कंपनी के करंट एसेट्स जो हैं वो एक्सीड नहीं करते हैं करंट लाइबिलिटी से, देन इट मे रन इनटू ट्रबल विद क्रेडिटर्स. इफ ए कंपनीज करंट एसेट्स डू नॉट एक्सीड, अच्छा अगर नहीं होते हैं तो एक्सीड होने चाहिए एक्चुअली. अगर नहीं होते हैं तो क्या होगा? तो वो ट्रबल में होंगे विद द क्रेडिटर्स
that want their money quickly. Not being able to meet its short-term obligations, company shall eventually lose its reputation, and not many vendors would like to do business with them. Current ratio, that is current assets to current liabilities ratio क्या होता है? Current ratio क्या होता है? Current assets divided by current liabilities along with the acid test ratio to supplement it has traditionally been considered the best indicator of the working capital situation. तो हमने बात किया था एसिड रेशो एसिड टेस्ट रेशो का भी उसमें क्या था? क्विक एसेट्स divided by current liabilities. It is understood that a current ratio of 2 for manufacturing firm implies that the firm has an optimum amount of working capital. ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात किया था कि करंट रेशो जो है करंट एसेट टू करंट लाइबिलिटी टू उसका हमने रखना है, और क्विक एसेट रेशो 1 का रखना है कम से कम. A higher ratio may indicate inefficient use of the funds, and a lower ratio would mean liquidity issues as mentioned above. This is supplementary to the quick ratio test ratio which should be at least 1. यहाँ हम बात करें ना, क्विक रेशो जो एटलीस्ट 1 होना चाहिए, which would imply that there is comfortable liquidity position if the liquid current assets are equal to the current liabilities, where quick assets divided by liquid current assets refer to the current assets less inventory and prepaid expenses. Bankers, financial institutions, financial analysts, investors, and other people interested in the financial statements have for years considered the current ratio at 2 and the asset test ratio at 1 as indicators of a good working capital situation. As a thumb rule, this may be quite adequate. However, it should be remembered that the optimum working capital can be determined only with reference to the particular circumstances of a specific situation. This company where the inventories are easily sellable and saleable, inventories are easily sale कर सकते हैं, and the sundry debtors are as good as liquid cash, the current ratio may be lower than 2, and yet the firm may be sound, or whether the nature of the finished goods are perishable in the nature like a restaurant, then also the organization cannot afford to hold the large amount of the working capital. On the other hand, an organization dealing in the products which takes a longer production time, they may need a higher amount of the working capital. In nutshell, a firm should have adequate working capital to run its business operations. Both excessive as well as the inadequate working capital positions are dangerous. Determinants of the working capital. Working capital management is concerned with the maintaining adequate working capital, managing the level of the individual current assets and the current liabilities, and financing the working capital. वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो है दो तरह की है बेसिकली. एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल मेंटेन करना है और उसको फाइनेंस कैसे करना है. सिंपल ही लग रहा है, इसमें कुछ ज़्यादा देखने को नहीं लग रहा है. जनरिक है पूरा. थ्री ईज क्या है ये देख लेते हैं. मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, इसमें थ्री ईज क्या हैं? इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस. इकोनॉमिक होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, इफेक्टिवनेस होनी चाहिए. ठीक है, दीज आर थ्री ईज, याद रहेंगे. ये हम यूज़ करते हैं अपने ऑडिट में भी. ठीक है, इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, थ्री ईज. इकोनॉमिक मतलब पैसे से लेना देना है. एफिशिएंसी, कितनी एफिशिएंटली यूज़ हो रहा है. और इफेक्टिवनेस मतलब जो चाहिए था रिजल्ट वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ठीक है, 1 रुपया कितने इफेक्टिवली एफिशिएंटली यूज़ हुआ है. इफेक्टिवनेस मतलब जो चाहते थे वो रिजल्ट आया कि नहीं आया. इकोनॉमी मतलब पैसे का सही यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ है, इकोनॉमिकली रहा है कि नहीं रहा है. Scope of working capital, liquidity and profitability, investment and financing. Investment and financing. Approaches of the working capital investment.
अप्रोचेस क्या क्या हैं? अप्रोचेस वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए एग्रेसिव, मॉडरेट एंड कंजर्वेटिव अप्रोचेस हैं। एग्रेसिव क्या कहते हैं? हियर इन्वेस्टमेंट इन द वर्किंग कैपिटल इज केप्ट एट मिनिमम इन्वेस्टमेंट in the current assets, which means the entity does hold lower level of inventory, follow strict credit policy, keeps less cash balances, etc. The advantage of this approach is that lower level of funds is tied in the working capital, which result in the lower financial cost. But the flip side could be a risk of stock outs, and that the organization could not grow, which leads to the lower utilization of the fixed assets and the long-term debts. In the long run, the firms may stay behind the competitors. This approach would better suit a highly integrated organizations with efficient process, जिसका बहुत efficient process है वही इसको use कर सकती है. Conservative approach किसके लिए थी? In this approach, organizations choose to invest high capital in the current assets. Organizations used to keep inventory level higher, follows liberal credit policies and cash balance as high as to meet the current liabilities immediately. The advantage of this approach are higher sales volume, increased demand due to the liberal credit policy, and increased goodwill among the suppliers due to the payment in the short time. The disadvantages are increased cost of the capital, inventory obsolescence, हायर रिस्क ऑफ बैड डेट्स बैड डेट्स का तो सवाल हो जाते हैं यहाँ पर, शॉर्टेज ऑफ लिक्विडिटी इन द लॉन्ग रन ड्यू टू द लॉन्गर ऑपरेटिंग साइकिल्स. मॉडरेट क्या है? दिस अप्रोच इज इन बिटवीन द अबाउट टू अप्रोचेज ऑब्वियसली. करंट एसेट्स टू फिक्स्ड एसेट रेशो. करंट एसेट्स टू फिक्स्ड एसेट्स ratio. The finance manager is required to determine the optimum level of the current assets so that the shareholders' value is maximized. A firm needs both the fixed and the current assets to support a particular level of output. As the firm's output and sales increases, the need for the current assets also increases. Generally, current assets do not increase in the direct proportion to the output. Current assets may increase at decreasing rate with output. As the output increases, the firm start using the current assets more efficiently. The level of the current assets may be measured by creating a relationship between the current assets and the fixed assets. Dividing current assets by fixed assets gives current assets to fixed asset ratio. Assuming assuming a constant level of the fixed asset, a higher current assets to fixed asset ratio indicates conservative current asset policy, and a lower current asset to fixed asset ratio means aggressive current asset policy, assuming all other factors to be constant. The following illustration explains the risk return trade off of various capital management policies. एस्टिमेटिंग वर्किंग कैपिटल नीड. वर्किंग कैपिटल की नीड जो एस्टिमेट करना है कैसे करें? ऑपरेटिंग साइकिल इज वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द वर्किंग कैपिटल. हाउएवर, other methods like a ratio of the sales and ratio of the fixed investment may also be used to determine the working capital requirement. These methods are briefly explained as follows. Current assets holding period. To estimate the working capital needs based on the average holding period of the current assets and relating them to the costs based on the company's experience in the previous year. This method is essentially based on the operating cycle concept. समझे? करंट एसेट होल्डिंग पीरियड. करंट एसेट होल्डिंग पीरियड के ऊपर है. रेशियो टू सेल्स. To estimate working capital needs as a ratio of the sales on the assumption that the current assets change with the changes in the sales. current assets जो change करते हैं with the changes in the sales, ये यहाँ पर ये assumption यहाँ पर लगती है. ठीक है. Ratio of the fixed investment. To estimate the working capital requirements is a percentage of the fixed investment. ठीक है. फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है मेरी परसेंटेज है. एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, उसके एक परसेंटेज जो है मैं वर्किंग कैपिटल के लिए यूज़ करने वाला हूँ.
या तो सेल्स के अकॉर्डिंगली मैं वर्किंग कैपिटल चेंज करूँगा, सेकंड में यही है, या फिर एक पीरियड के बेसिस पर मैं होल्डिंग पीरियड मेरा कितना होना है उसके बेसिस पर मैं सिलेक्ट करूँगा. A number of factors will, however, be impacting the choice of the method of estimating the working capital. Factors such as seasonal fluctuations, accurate sales forecast, investment cost, and variability in the sales price would generally be considered. The production cycle and credit and collection policies of the firm will have an impact on the working capital requirements. Therefore, they should be given due weightage in projecting the working capital requirements. ऑपरेटिंग और वर्किंग कैपिटल साइकिल की बात करेंगे. ऑपरेशन या वर्किंग कैपिटल साइकिल की बात करेंगे. A useful tool for managing the working capital is the operating cycle. The operating cycle analyzes the accounts receivables, inventory, accounts payable cycle in terms of number of days. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारा, जिसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल साइकिल रहता है एक. ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे अकाउंट्स रिसीवेबल की, इन्वेंट्री की एंड अकाउंट्स पेबल की. ठीक है, इन द नंबर ऑफ डेज में. तो ये बातें हैं, रिसीवेबल कितने हैं, इन्वेंट्री कितनी और पेबल कितने हैं, पेबल कितने हैं. अकाउंट्स रिसीवेबल आर एनालाइज्ड बाय द एवरेज नंबर ऑफ डेज इट टेक्स टू कलेक्ट एन अकाउंट. Inventory is analyzed by the average number of days it takes to turn over the sales of a product from the point it comes in the store to the point it converted into cash or an accounts receivable. Accounts payable are analyzed by the average number of days it takes to pay a supplier invoice. ठीक है. ऑपरेटिंग वर्किंग साइकिल, ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल साइकिल डेफिनेशन. वर्किंग कैपिटल साइकिल जो है इंडिकेट्स द लेंथ ऑफ द टाइम बिटवीन द कंपनीज पेइंग फॉर द मटेरियल, entering into the stock and receiving the cash from the sales of the finished goods. It is determined by adding the number of days required for each stage in cycle. For example, company holds raw material for an average of 60 days. It gets credit from the supplier for 15 days. Production process needs 15 days. Finished goods are held for 30 days and 30 days credit is extended to the debtors. This total is 120 days इज़ द टोटल वर्किंग कैपिटल साइकिल. समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसके अंदर. यह है वर्किंग कैपिटल साइकिल. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे कैश है, रॉ मटेरियल, लेबर ओवरहेड, WIP, स्टॉक, रिसीवेबल्स. तो ये हमारा साइकिल बन जाता है, वर्किंग कैपिटल का साइकिल बन जाता है एक. ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट साइकिल है हमारा. कैश है, कैश से हमने रॉ मटेरियल खरीदा, लेबर खरीदी, वर्क इन प्रोग्रेस हुआ, स्टॉक बना, इन्वेंट्री बनी, उसको रखा, उसके बाद उसको बेचा, उससे हमें रिसीवेबल बने, और रिसीवेबल जब बने तो हमारा जब मतलब कैश आ गया. इन्वेंट्री के स्टॉक को बेचा तो क्या है, डेटर को बेचा, उधार दिया हमने, और कुछ देर के बाद वो आ गए, रिसीवेबल्स हो गए, तो बाद में अल्टीमेटली कैश बन गया फिर से. तो ये साइकिल बन जाता है ऐसे. मोस्ट बिजनेस cannot finance the operating cycle. Accounts receivable days plus inventory days with accounts payable financing alone. Consequently, working capital financing is needed. This shortfall is typically covered by the net profits generated internally or by externally borrowed funds or by a combination of the two. Okay, internally or externally borrowed funds, हम इसके लिए भी बोरो करने पड़ रही है इंटरनली एक्सटर्नली. The faster a business expands, the more cash it will need for the working capital and investment. The cheapest and the best source of the cash exists at the working capital right within the business. Good management of working capital will generate cash, which will help improve the profits and reduce the risk. Bear in mind that the cost of providing credit to the customers and holding stocks can represent a substantial proportion of a firm's total profit. Each component of the working capital, namely inventory, receivables, and payables, has two dimensional time and money. When it comes to
managing working capital, then time is money. If you get money to move faster around the cycle, collect amount due from the debtors more quickly, or reduce the amount of money tied up, that is, reduce inventory levels related to sales, the business will generate more cash, or it will need to borrow less money to fund working capital. Similarly, if you can negotiate improved terms and with the suppliers, that is, get longer credit or an increased credit limit, you are effectively creating free finance to help fund future sales. If you then, अगर ये करते हो तब, collect receivables from debtors, collect receivables debtors faster, then you release cash from the cycle. If you collect receivables slower, your receivables soak up cash. If get better credit in some duration of the amount from suppliers, you increase your cash resources. If you shift inventory sorry if you shift inventory stocks faster, you free up cash. Move inventory slower, you consume more cash. तो जब भी स्लो हो रहा है बेटा कैश आपका, टाइम इज मनी, टाइम इज मनी. The determination of operating capital cycle helps in forecasting, controlling, and management of the working capital. The length of the operating cycle is the indicator of performance of the management. The net operating cycle represents the time interval for which the firm has to negotiate for the working capital from the lenders. It enables to determine accurately the amount of working capital needed for the continuous operation of business activities. The duration of the working capital cycle may vary depending upon the nature of the business. Operating cycle is equal to R plus W plus F plus D minus C. और क्या है, रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड. W क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड. F क्या है, फिनिश्ड गुड स्टोरेज पीरियड. D क्या है, रिसीवेबल्स डेटर्स कलेक्शन पीरियड. C क्या है, माइनस क्या है C को, क्रेडिट पीरियड अलाउड बाय द सप्लायर्स. कोशिश करते हैं कि सप्लायर से तो हमें ज़्यादा टाइम मिल जाए, लेकिन हम जल्दी से जल्दी कलेक्ट कर लें. तो दोनों ही अगर चीज़ें हो जाएं तो हमारा फ़ायदा ही है. ठीक है, क्रेडिटर से हमें ज़्यादा टाइम मिल रहा है और डेटर से हमें जल्दी से कलेक्शन कर ले रहे हैं, है ना. वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री में आल्सो बी टर्म्ड एज दी वर्क्स कॉस्ट. ये कहाँ आ गया स्टार, कहाँ पर है. Also, number of operating cycles in a year is equal to 360 or 365 divided by operating cycles. ठीक है, wherein more the number of operating cycles, better it is for an organization as it indicates shorter operating cycle. The various components of the operating cycle may be calculated as shown below. Raw material storage period, average stock of the raw material, average stock of the raw material divided by the average cost of the raw material consumption per day. रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड मालूम पड़ेगा हमें इससे, कितने दिन तक रख रहे हैं. एवरेज स्टॉक ऑफ द रॉ मटेरियल कितना है, और एवरेज कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर डे. सेकेंड, वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड कितने हैं. एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे. ठीक है, एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे. देखो सिंपल याद करने का तरीका क्या है, जब भी कुछ आए क्वेश्चन में तो जहाँ नीचे पर डे लिखा ना वो नीचे आना चाहिए. इससे क्या होता है कि जब ये, क्योंकि ये डिवाइडेड पर डे मतलब डिवाइड कर रहे हैं तो ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर नंबर ऑफ डेज आ जाएगा, ये पीरियड निकल के आएगा. ठीक है, सिंपल तरीका है. ये देखो, finished goods storage period, average stock of the finished good divided by the average cost of the goods sold per day. ठीक है. receivables debtors collection period, एवरेज रिसीवेबल्स कितने हैं डिवाइडेड बाय द एवरेज क्रेडिट सेल्स पर डे. जब डेटर्स की बात हो रही है तो यहाँ पर क्रेडिट सेल्स की बात होगी. ठीक है, हम क्रेडिट पे बेच रहे हैं तो कितनी हो रही है पर डे.
क्रेडिट पीरियड अलाउड बाय द सप्लायर्स, ठीक है। तो एवरेज पेबल्स कितने हैं हमारा, ठीक है, सप्लायर्स जिन्होंने रॉ मटेरियल सप्लाई किया उनको पेबल रहता है हमारा एवरेज पेबल्स डिवाइडेड बाय द एवरेज क्रेडिट परचेजेस पर डे, वर्किंग कैपिटल बेस्ड ऑन द ऑपरेटिंग साइकिल। One of the method for forecasting the working capital requirement is based on the concept of operating cycle. The calculation of operating cycle and the formula for estimating the working capital on the basis has been demonstrated with the help of the following illustration. Okay, illustration करनी पड़ेगी, छोड़ दो, नहीं आने वाला है। Estimation of the amount of different components of the current assets and current liabilities. The various constituents of the current asset and current liabilities have a direct bearing on the computation of the working capital and the operating cycle. The holding period of the various constituents of the current assets and current liability cycle may either contract or expand on the net operating cycle period. Shorter the operating cycle period, lower will be the requirement of the working capital and vice versa. तो correct है, shorter the operating cycle period, lower will be the requirement of the working capital, ठीक है ना। Estimation of the current assets. The estimates of various components of gross working capital or the current assets, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल the current assets कहते हैं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल जो होती है वही करंट एसेट्स होती है। तो समझ में आता है कि नहीं आता है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज द करंट एसेट्स। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, the funds to be invested in the raw material inventory may be estimated on the basis of production budget, the estimated cost per unit and the average holding period of the raw material inventory by using the following formula. Estimated production divided by 12 months 365 days into estimated cost per unit into average raw material storage period. Okay, raw material inventory याद करना पड़ेगा, एस्टिमेटेड प्रोडक्शन यूनिट डिवाइडेड बाई 12 मंथ्स इंटू एस्टिमेटेड कॉस्ट पर यूनिट एवरेज रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड। ओके, ओके, work in progress inventory. Work in progress inventory, the funds to be invested in the work in progress can be estimated following formula. Estimated production divided by 12 months into estimated work in progress cost per unit into average WIP holding period. ओके, यहाँ पर एवरेज की बात हो रही है, यहाँ एवरेज की बात हो रही है, यहाँ पर एस्टिमेटेड कॉस्ट पर यूनिट की बात हो रही है, एवरेज WIP कॉस्ट पर यूनिट की बात हो रही है। पर यूनिट हो गया, ये एस्टिमेट नहीं, इसमें डिवाइडेड में 12 मंथ से 12 मंथ से एस्टिमेटेड प्रोडक्शन यूनिट है, एस्टिमेटेड प्रोडक्शन यूनिट है, सेम ही। फिनिश्ड गुड्स की बात करें, द फंड्स टू बी इन्वेस्टेड इन द फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री कैन बी एस्टिमेटेड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फार्मूला। एस्टिमेटेड प्रोडक्शन यूनिट डिवाइडेड 12,365 इनटू एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट इनटू एवरेज फिनिश्ड गुड्स स्टोरेज पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पर एवरेज फिनिश्ड गुड्स स्टोरेज पीरियड आ गया, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट आ गया, यहाँ पर 12,365 हो गया, एस्टिमेटेड प्रोडक्शन यूनिट की बात होगी। रिसीवेबल डेटर्स, फंड्स टू बी इन्वेस्टेड इन द ट्रेड रिसीवेबल डेटर्स मे बी एस्टिमेटेड विद हेल्प ऑफ फॉलोइंग फार्मूला। एस्टिमेटेड क्रेडिट सेल्स कितनी है, डेटर मतलब डेटर से पैसे लेना, तो क्रेडिट सेल्स कितनी की है 12,365 डेज आ गया। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सेल्स एक्सक्लूडिंग द डेप्रिसिएशन पर यूनिट इनटू एवरेज रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड कितने हैं, एवरेज रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड कितना है, तो लास्ट में पीरियड आता है हमेशा, इसमें देखो लास्ट में पीरियड की बातें हो रही हैं, बीच में कॉस्ट पर यूनिट की बातें हो रही हैं, इसमें कॉस्ट पर यूनिट की बातें हो रही हैं, इसमें पीरियड की बातें हो रही हैं, यहाँ 12,365 डेज की बातें हो रही हैं, एस्टिमेटेड प्रोडक्शन की बातें हो रही हैं, जो भी हैं फिनिश गुड्स की बातें हो रही है, एस्टिमेटेड प्रोडक्शन की बातें हो रही हैं, एस्टिमेटेड क्रेडिट सेल की बातें हो रही हैं, जब डेटर की बातें करें एस्टिमेटेड सेल्स की बातें होंगी, यहाँ पर प्रोडक्शन की बातें होंगी, यहाँ पर यूनिट की बातें होंगी, यहाँ पर पीरियड की बातें होंगी, ठीक है। यहाँ पर 12,365 डेज की बातें होंगी, 12,365 डेज की बातें होंगी, 12 मंथ 365 डेज। Note that only cash cost is considered for the debtors and the finished good.
elements as the sales to the debtors include cost and profit, whereas the funds required for working capital purposes does not need to include profits. Further, non-cash expenses like depreciation is also excluded. depreciation यहाँ पर क्या करते हैं, एक्सक्लूड की जाती है. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की बात करें तो मिनिमम डिजायर्ड कैश एंड बैंक बैलेंस टू बी मेंटेन्ड बाय द फर्म टू बी एडेड इन द करंट एसेट्स फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ द वर्किंग कैपिटल. ठीक है, तो इसमें ऐड करना पड़ेगा minimum desired cash and bank balance to be maintained by the firm and has to be added to the current assets. ठीक है, ऐड करना पड़ेगा उसको, वही तो है. करंट एसेट्स है क्या, बेसिकली वही है. बैंक बैलेंस कितना है, कैश कितना है, ताकि हमें वर्किंग कैपिटल पता लग सके. एस्टिमेशन ऑफ करंट लायबिलिटीज. Current liabilities are deducted from the current assets to get the working capital. Current assets minus current liabilities is the working capital. Hence, the amount of working capital is lowered to the extent of the current liabilities other than the bank credit arising in the normal course of business. जब बैंक क्रेडिट को अदर देन द बैंक क्रेडिट करंट लाइबिलिटीज को छोड़ देते हैं. The important current liabilities like the trade payables, wages and overheads can be estimated as follows. Trade payables. Trade payables can be estimated on the basis of the material purchase budget and the credit purchase by using the following formula. Estimated credit purchase 12/360 into the credit period allowed by the suppliers. Direct wages. It is estimated with the help of the direct wages budget by using the following formula. Estimated labor hours into wage per wage rate per hour divided by 12 months of 365 days into average time lag in the payment of wages. Average time lag in the payment of wages. Overheads other than the depreciation and amortization, it may be estimated with the help of the following formula. Estimated overheads divided by 12360 लिखे हैं यहाँ पर into average time lag in the payment of overheads. other than the overhead की बातें other than depreciation and amortization की कर रहे हैं. देखो, number of days in the year can be taken as 365 or 360 days. Okay, working capital requirement estimation based on the cash cost. We have already seen that the working capital is the difference between the current assets and current liabilities. To estimate the requirements of the working capital, we have to forecast the amount required for each item of the current asset and current liabilities. In practice, another approach may also be useful in estimating the working capital requirements. This approach is based on the fact that the case of the current assets like sundry debtors and finished goods, etc., the exact amount of the funds blocked is less than the amount of such current assets. For example, if we have sundry debtor worth rupees 1 lakh, यदि sundry debtor क्या होता है, यहाँ पर गूगल करें तो सन्ड्री डेटर्स क्या लिखा है. डेटर तो हमें पता है, डेटर क्या होता है, उधार लिया हुआ उसने हमसे, हमने मतलब उससे सामान बेचा हुआ है, उसको क्रेडिट पर सेल किया हुआ है और हमने पैसा उससे लेना है. ठीक है, वो डेटर है. लेकिन सन्ड्री डेटर क्यों बोल रहे हैं उसको, जब वो हमें पैसा तो वापस करेगा ही, लेकिन साथ में वो विद इंटरेस्ट पे करेगा, लिखा है विद एडिशनल इंटरेस्ट एप्लीकेबल एट टाइम्स. ठीक है, वो फ्यूचर में पे करने वाला है. तो क्रेडिट पर उसने सामान तो ले रखा है, लेकिन वो हमें पेमेंट कर रहा है ऑन द इंटरेस्ट बेसिस करके, ऐसे ही लिखा है. वो ये सन्ड्री डेटर होता है, लिखा है. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. इफ़ वी हैव sundry debtors worth rupees 1 lakh and our cost of sale is 75,000, the actual amount of the funds blocked in the sundry debtor is rupees 75,000. The cost of sundry debtor, the rest 25,000 is profit. ठीक है, तो इस लाइन का मतलब समझ गए क्या है कि हो सकता है कि सन्ड्री डेटर 1 लाख का हो. ठीक है, हमने उसे कोई सामान है, हमें उसकी कीमत है, हमने जो बनाया है उसको कॉस्ट उसकी जो हमें लगी है वो 75,000 ही लगी है, लेकिन हमने उसको जो बेचा है वो हमने 1 लाख का बेचा है उसको. ठीक है, हम कुछ प्रॉफिट डाल के बेचते हैं ना उसको.
हमने बेचा है उसको 1 लाख का, तो हमारी जो एक्चुअली जो रिसीवेबल है, ठीक है, हमारे जो फंड एक्चुअली जो ब्लॉक हैं वो तो 75,000 के ब्लॉक हैं। तो कॉस्ट ऑफ सेंट्री डेटर जो है वो जो बेसिकली कॉस्ट ऑफ सेंट्री डेटर जो है वो तो हमारी 75,000 ही है, कीमत हमें पड़ रही है जो वो 75,000 ही पड़ रही है, बाकी 25,000 तो हमारे प्रॉफिट ही है ना। Again, some of the cost items also are non-cash cost. Depreciation is a non-cash cost item. Suppose out of 75,000, 5,000 is depreciation. Then it is obvious that the actual funds blocked in terms of the sundry debtor totaling 1 lakh is 70,000 only. In other words, 70,000 is the amount of funds required to finance sundry debtors worth rupees 1 lakh. 5,000 depreciation उसमें से वो भी कम हो जाएगी. Similarly, in the case of finished goods, which are valued at the cost, non-cash cost may be excluded to work out the amount of the funds blocked. Many experts therefore calculate the working capital requirement by working out the cash cost of the finished goods and sundry debtors. Under this approach, the debtors are calculated not as a percentage of the sales value but as a percentage of the cash cost. Similarly, finished goods are valued according to the कैश कॉस्ट. इसका भी इलस्ट्रेशन दे दिए कि चलो जरा ऊपर यहाँ पर आगे हम इफेक्ट्स ऑफ डबल शिफ्ट वर्किंग ऑन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स. डबल शिफ्ट, द ग्रेटेस्ट इकोनॉमी इन इंट्रोड्यूसिंग डबल शिफ्ट इज द greater utilization of the fixed assets. Although production increases little or very marginal funds may be required for the additional assets, but increase in the number of hours of production has an effect on the working capital requirements. Let us see the impact of double shift on some of the components of the working capital. It is obvious that in double shift working, an increase in the stocks will be required as the production rise. However, it is quite possible that the increase may not be proportionate to the rise in the production, since the minimum level of the stocks may not be very much higher. Thus, it is quite likely that the level of the stocks may not be required to be doubled as the production goes up the twofold. ठीक है, तो टाइमिंग बढ़ाने से, टाइमिंग को डबल करने से प्रोडक्शन जो है वो भी क्या कह रहे हैं कि इंक्रीज हो रहा है. इट इज़ ऑब्वियस दैट द डबल शिफ्ट वर्किंग इंक्रीज इन द स्टॉक्स विल बी रिक्वायर्ड. स्टॉक्स की तो डबल इंक्रीज इन स्टॉक्स विल बी रिक्वायर्ड as the production rises. However, it is quite possible, दोबारा पढ़ेंगे एक बार. Okay. It is obvious that in the double shift working, an increase in the stocks will be required as the production rises. However, it is quite possible that the increase may not be proportionate. Increase may not be proportionate to the rise in the production, since the minimum level of the stocks may not be very much higher. Thus, it is quite likely that the level of the stocks may not be required to be doubled as the production goes up the twofold. जो स्टॉक्स रखने हैं वो टू फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है हमें जब प्रोडक्शन राइजेस होती है. एक्चुअली टाइम इज़ मनी ना भाई, टाइम को हमने डबल शिफ्ट कर दिया, टाइम को कम कर दिया हमने. द अमाउंट ऑफ मटेरियल इन प्रोसेस will not change due to double shift working, since work started in the first shift will be completed in the second. Hence, capital tied up in the materials in process will be the same as with the single shift working. As such, the cost of work in progress will not change unless the second shift workers are paid at higher rate. Also, additional requirement of materials and other resources may result in some economic, for example, better negotiation with the vendor on account, increased purchase of material, etc. Further, all the fixed costs may not increase with the additional shift. Okay. खत्म हो गया क्वेश्चन है इसमें. एमसीक्यूज इसके अंदर एमसीक्यूज नहीं है, खत्म हो गया.